पाकिस्तान वालों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तगड़ी चोट देने के बाद पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के पराक्रम को लोहा मान लिया है। भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे दूसरी ताकतवर वायुसेना कहा जाने लगा है। ऐसे में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जो कहा, उनके शब्दों में इतना विश्वास था कि वह पाकिस्तानी सेना के अंदर खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी था। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने साफ कहा, हमने हिंदुस्तान का कमिटमेंट दुनिया के सामने दोहराया है, प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। सुनिए इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है। Seafaring nation and we need to be the big naval power, but I think whether it's a land power or naval power, air force will always remain. The air power will have to be interesting to both these. Any kind of operations that we do, we can't do it without air power, and I think that has been proved very well during this operations also. So our focus as far as air power is concerned, we need to make sure that we have to have the capability plus the capacity. This again has been alluded to today. We cannot just talk about producing in India. We need to start designing and developing in India also. And when it comes to producing in numbers, the capacity comes in. So we need to have this trust between the forces and the industry continued. We need to have the communication continued. We need to be open with each other. We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. That pran jaye par vachan na jaye, I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने commit किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना?